असम में हाल ही में हुई तीसरी और चौथी श्रेणी की लिखित परीक्षा को लेकर एक अभ्यर्थी की ट्वीट से हड़कंप मच गया है। विक्टर दास नामक एक शख्स की ट्वीट से लाखों अभ्यर्थी के साथ ही पुलिस महकमे के भी हाथ पैर फूल गए हैं। दरअसल विक्टर दास नामक शख्स ने ट्वीट के जरिए शिकायत करते हुए कहा कि एक पूर्व विधायक के नेतृत्व में तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरी के लिए पदों के हिसाब से 3 से 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। इसकी सच्चाई की जांच के लिए पुलिस ने आज उन्हें पान बाजार थाने बुलाया है। पुलिस पान बाजार थाने में विक्टर दास से उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच कर रही है। विक्टर दास ने फिर कहा है कि वो इसका सबूत पेश करेंगे। मोटा जिखिनि আছে সেইখিনি মই প্ৰশাসনক দিম আৰু মই এটাই কথা কম মই ভাগৰা নাই একো নাই মই এইখিনিয়ে কম মই ভাগৰা নাই আৰু মই নাভাগৰো বিনোদ আপোনাৰ ভাগৰা নাই আপুনি কোৱা কথাবোৰ তথ্য আছে না আপোনাৰ লগত और इधर स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि अब तक हुई जांच से स्पष्ट है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटि रहित हुई है। जीपी सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता अपने दावे को साबित करने के लिए अब तक पुलिस को कोई सबूत नहीं दे पाया है। स्पेशल डीजीपी सिंह ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता कोई सबूत नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। এনেকুৱা যেতিয়া এলিগেশ্যন আহে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে তদন্ত কৰোঁ আৰু তদন্তত যদি কিবা এটা স্পেচিফিক ওলায় তেতিয়া আমি একশ্যন লওঁ। এতিয়ালৈকে সেইটো কেছত আমাক কোনো স্পেচিফিক একো দিব পৰা নাই। আমি যিখিনি তদন্ত কৰিছোঁ এনেকুৱা কোনো এভিডেন্স পোৱা নাই যে কিবা এটা গণ্ডগোল এতিয়ালৈকে হৈছে নে দুৰ্নীতি হৈছে। যিজন মানুহে এইটো লিখিছে তেওঁ যিদিনা পেপাৰ হৈছিলে সেইদিনা তেওঁ লিখিছিলে যে মোৰ কোচিঙৰ প্ৰায় 100% কুৱেশ্যনছ আহিছে আৰু সেইদিনা মই কামৰূপ আৰক্ষীক আৰু চিটি আৰক্ষীক এইটো কথা কৈছিলোঁ যে এই যেনে যেতিয়া টুইটাৰত ক্লেইম কৰিছে যে মোৰ 100% পেপাৰ আহিছে কুৱেশ্যন আহিছে তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি সেইটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিটো দেখা গৈছে এইটো প্ৰায় এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট যিটো তেওঁ ক'ৰবাত কিবা এটা কোচিং নে ইউটিউব চেনেল চলাই আছে এইটো পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট বুলি মই এতিয়ালৈকে ভাবোঁ আৰু মই চিটি আৰক্ষীক এই কথাটো কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীক যে যদি তেওঁ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে সেইটো লিখিছে আৰু তেওঁ ক'তো এভিডেন্স দিব নোৱাৰে আৰু আমি তদন্ত কৰি যদি ক'তো এভিডেন্স নাপাওঁ তেনে একশ্যন তেওঁৰ এগেইনষ্টটো ল'ব লাগে। মই আজি ডেটত চিয়'ৰ যে পৰীক্ষা একেবাৰে নিয়াৰিকৈ হৈছে সুন্দৰভাৱে কৰা হৈছে ক'তো তাত কোনো ত্ৰুটি নাই ক'তো লুপহোল থাকি যোৱা নাই। और वहीं उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले अधिकांश लोग अभ्यर्थियों से परीक्षा में आए सवालों के आधार पर नोट्स तैयार करते हैं जिसके बाद में विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षा जिखिनि कैंडिडेट बही परीक्षाটো দিয়ে কিছুমান কোচিং সেন্টার ইত্যাদি তেওঁলোকৰ পৰা কোৱেশ্চনছটো লৈ লয় তেওঁলোকৰ মনত যিখিনি থাকে তেওঁলোকৰ দি অহা পিছত আৰু তেনেকুৱা তেওঁলোকে বহুত মানুহ 200 400 500 মানুহ কণ্টেক্ট কৰি কোৱেশ্চনছো লয় আৰু কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰো লয় তাৰ পিছত সেই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰৰ এটা সেটটো তেওঁলোকে বনায় যেটোকে তেওঁলোকে পিছত নেক্সট যিখিনি পৰীক্ষা হয় তাত এটা স্যাম্পল কোৱেশ্চন পেপাৰ হিচাপে নে টেষ্ট কোৱেশ্চন পেপাৰ হিচাপে ইউজ কৰে তেনেকুৱা হৈছে বুলি মোক লাগিছে। তথাপিও যেটুকে এটা এলিগেশ্যন ইমান এটা সিৰিয়াছ এলিগেশ্যন আহিছে আমি তদন্ত নকৰাকৈ আমি এৰা নাই কিন্তু এটা কথা মই আকৌ কৈছোঁ মই আজি ডেটত একদম 100% চিয়'ৰ যে পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ হৈছে সুন্দৰভাৱে হৈছে ক'তো কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাই। अब सवाल यह है कि ट्वीट के जरिए सनसनी फैलाने वाला विक्टर दास आखिर कौन है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से विक्टर दास राजगढ़ और मालीगांव में स्कोर डेमी नामक कोचिंग सेंटर चलाता है। इसके अलावा भी वो विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है।